Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English 9. I'm your instructor Zia Hamid. I hope that you're doing well. Students, we are about to start our unit number 4. This will be our introductory lecture. I'll make you recall the previous lessons जो हमने अभी तक unit 3 units हमने cover किए हैं. We have covered different lectures, different SLOs. उसमें reading and critical thinking के SLOs थे, which is directly related to your comprehension. There was grammar in terms of tenses and so many other aspects of grammar, and also vocabulary, where we talked about context clues and so many other things. Then we covered in the previous three units, we covered oral communication SLOs. So I hope that you are practicing it. Now we are at the start of our our unit number 4, students. So just to quickly take a feedback from you guys. Now, students, क्या आप लोगों को अब तक जितने हमने SLOs पढ़े हैं, have you been practicing it? जी, क्या आप लोगों को हर SLO in its entirety समझ आ गया? Good. Yes, I want response from Zoom class. All right. Now, we are about to start Unit 4, and now let's see. We will be covering actually Lecture 1, which is about using all types of tenses correctly in our speech and writing. जी बताएं, last time क्या हमने कोई tense पढ़ा है till now? But are you aware of tenses? Yes, you are. Very good. So we know that there's present tense, past tense, and future, and they're further divided into parts like simple and perfect, continuous and perfect continuous. The rules are very simple. अगर आप ये rules याद कर लेंगे with a very good memory, तो जब भी आप बात करेंगे, you will speak according to the tense, you will take care of the tense के mix up तो नहीं हो रहा, and you will perform it in every type of writing. They are very important कि हम all the tenses, we recall them, we learn them one by one as they are coming up in different units, they are coming up in different aspects. There will be activities, worksheets, question banks. I hope कि पिछले lectures में सारे SLOs के जो resources थे, question bank, worksheet, आप लोग consistently उसको solve कर रहे हैं and you're giving your input. It is better that you submit the worksheets, all those prompts, activities in the group. Very important for me to assess you. Now, पहले lecture में तो हम tenses को पढ़ेंगे. तो before you attend lecture number 1, आप लोगों ने क्या करना है? The last night before we start the lecture, you have to revise all the tenses. And then if you have any kind of problem, then you can ask me कि सर continuous में तो इस तरह है, लेकिन perfect continuous में इसका इस्तेमाल इस तरह आ रहा है. So you have to be very much ready for lecture number 1 about tenses. Now, ये तो हमारा grammar का SLO हो गया lecture number 1 में. Next lecture में हम again, is it vocabulary or grammar? जी बताएं जल्दी. This is clearly related to your grammar because we are talking about parts of speech. जिस तरह tenses important हैं students, आपकी speech में, आपकी writing में, your parts of speech, every one of them, चाहे वो noun भी है अगर, या all of them, here we will be talking about conjunctions, right? And we know that there are different conjunctions. They are divided into two categories basically. Basically three. Subordinating conjunction, coordinating conjunction और correlative conjunction. हम इन तीनों को देखेंगे. We will take activities, short assessment test, and you want to participate in the lecture because you have to clear your understanding of the different uses. तो क्या होगा कि हम पहले
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ेंगे, और हमें पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट। तो ये सारे कंजंक्शंस हैं, ये हमारी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और इनको याद करने का क्या तरीका है, फैन बॉयज। तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, व्हाइल, अनटिल। तो ये सारे कंजंक्शंस, और कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि बताएं, नाइदर, नॉर, पेयर्स में होते हैं ना हमारे पास कोऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और आइदर, और, वेदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड एंड दे विल वर्क इन पेयर। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जी बताएं, इससे पहले हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को किया है, डेफिनेटली, हाउएवर, बिकॉज, देयरफॉर। तो ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशन करनी है ना, कि इट वाज रेनिंग तो आई गॉट लेट। तो ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, इनको भी हमने पढ़ना है, ताकि ये हमारे सेंटेंसेस को जोड़े, बजाय इसके कि हम एक एक सेंटेंस को अलग अलग लिखें, शॉर्ट सेंटेंस, वी कैन राइट द सेंटेंस इन वन and make it a complex or compound sentence. That's why we need transitional devices. तो ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, इनमें ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, हम उनको देखेंगे, और ये दो जो चीजें हैं वी विल बी कवरिंग इन लेक्चर 2। आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करना है बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं स्टूडेंट्स? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, preposition, interjection, or sometimes we also include article in it, right? All right, and then we will talk about those transitional words जो हमारे sentences को आपस में जोड़ते हैं, या लॉजिक बनाने के लिए, एक सेंटेंस से मूव करने के लिए दूसरे सेंटेंस में we use transitional devices. Now फिर हम लेक्चर 3 को पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, distinguish between connotative and denotative meanings of words. Yes, meanings किसी भी वर्ड के दो तरह के होते हैं, या तो डिक्शनरी मीनिंग होगा उसका, जिसे हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, जो आप डिक्शनरी में फाइंड करेंगे, बट समटाइम्स यू सी दैट वो लफ्ज किसी और तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, कॉनोटेटिवली, कल्चरली, एसोसिएशन के साथ, या इमोशनल कनेक्शन के साथ। तो आप देखेंगे एक वर्ड है लेकिन उसके डिफरेंट वेरिएशन ऑफ मीनिंग्स आर अवेलेबल। तो आई होप कि इस लेक्चर में हम मीनिंग को क्लियर करेंगे, और similar and dissimilar denotations and their appropriate and how they are appropriate. So similar and dissimilar, कुछ meanings, कुछ words similar meaning देंगे आपको denotative में और connotative में, but there are some words जिनके meaning connotative में कुछ और है लेकिन denotative में कुछ और है। तो ये भी words हैं। We will see a list of all these kind of words, students. So आपने how are you going to prepare before you attend this lecture? You're going to consult a dictionary. अगर आपके पास नहीं है, you can buy it from the store, pocket dictionary ले लें, but you have to have it if you're learning a language, because we are learning English, which is a language, so we need to always have a dictionary with us. If not, then you can have a digital dictionary, but it's better that you have a physical one with you. So we will be talking about the different kinds of meanings, किस तरह वो आपस में different हैं, और lecture 4 में students हम क्या पढ़ेंगे, read, view and analyze a variety of reading grade appropriate and high interest books. क्या है grade appropriate books? Books that are according to your reading level of grade 9. तो इस तरह की जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, नॉवेलाज हैं, नॉवेला इज अ शॉर्ट नॉवल,
we call it novella or novelette. So you will, as a 9th grader, आप देखें कि कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जो आपको अब तक पढ़ लेने चाहिए थे. अगर नहीं पढ़े, then you can go to a bookstore, buy the books and read, because this is related to reading comprehension. You will read different kinds of books, high interest books, books that are very much important to you as a 9th grader, and texts from print and non-printed sources. अब यहाँ पे जो चीज स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे वो है पोइट्री. हम देखेंगे फ्री वर्स. इट्स अ काइंड ऑफ अ पोम जिसमें कोई भी रिदम नहीं है, फ्री वर्स है. देयर इज नो राइमिंग स्कीम. आप फाइंड नहीं कर सकते उसमें राइमिंग स्कीम. नैरेटिव एंड रिदमिक पोम्स. रिदम वाली पोम्स भी देखेंगे जो राइमिंग स्कीम रखती हैं, और नैरेटिव पोम्स भी देखेंगे जिसमें मोस्टली राइमिंग स्कीम नहीं होती, बट एक नरेशन है उस पोम के अंदर, एक स्टोरी चल रही है उस पोम के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? नैरेटिव पोम. Because poems have different kinds of types. There are different kinds: epic poems, narrative poem, or free verse, blank verse. I can go on and on. बहुत सारी categories हैं. So as a learner, as somebody who love reading literature, you should be aware of all these types of poems. All right, so we will see what these different kinds of poems are, how do they work, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनको लिखा जाता है. और the second SLO that we have covered over here, we will be covering, is actually making recommendations and develop an interest in fiction and poetry. Yes, it's a very interesting thing, and I will recommend you some books, some fictions and poetry to read. Reading assignments, right, where you have to read and then come in the class and say, yes, I have read this. Now I'm going to read this book. तो जितनी भी recommendations क्या हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली books for your interest, you can read them easily. Now we will be covering this reading comprehension, and for lecture number 5, what is it about? This is about writing summary. क्या करते हैं हम समरी में? जो भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसको जूस अप करके सारा उसका एक क्लियर एक क्या कहते हैं, जिस्ट निकालते हैं, उसको हम समरी कहते हैं. कि अगर आपकी समरी पढ़ें तो जो टेक्स्ट है उसका आइडिया हो जाए. जो ओरिजिनल टेक्स्ट हम लेते हैं और उसको पढ़कर समराइज करते हैं इन आवर ओन वर्ड्स. So, but students, there are two kinds of summaries: objective summary and subjective summary. Now we will try to learn that how we can write a very good objective summary of fiction and poetry. Yes, किसी भी fictional text की या poetry की भी summarize. हम paraphrase करते हैं लेकिन हम summarize भी करते हैं उसे. And objective summary में क्या आता है? सबसे पहले तो आप जब घर जाएंगे, before you start this lecture, आपको पता है next day lecture 5 होगा, then आप पढ़कर आएंगे, थोड़ा सा summaries देखेंगे different texts की, and we will see that what is objective summary. Objective summary में आपका कोई point of view नहीं होगा. जो आप पढ़ेंगे उसी को उसी तरह summarize करेंगे. मैं क्या सोचता हूं या सोचती हूं, उसमें अपना ओपिनियन ऐड नहीं करेंगे. जब आप अपना ओपिनियन ऐड नहीं करेंगे तो वो कैसी समरी होगी? ऑब्जेक्टिव समरी कहलाएगी. वो करेंगे. और लेक्चर 6 में we will discuss how authors use language, including figurative language, considering the impact on the reader. Yes, figurative language. Students, क्या हमने ये पहले कवर किया है figurative language? Yes, we have. And what is figurative language? It is not meant to be taken literally, because this is to be taken figuratively, and they have figures of speech. शाबाश. Figures of speech को हम देखेंगे. Can you name some figures of speech? Just let me know कि आपको कितनी understanding है previous lesson से. What are
figures of speech. जी, तो गुड, अच्छा जी, तो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपिया और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ये सारी हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और वो किस में आती हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज में। और ये कहां यूज होंगी? जब आप किसी पोम को एनालाइज करेंगे तो आप पॉइंट आउट करेंगे, ये देखें, ये एक एलिट्रेशन है, ये एक मेटाफर है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये सिमिली है। तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए if you want to analyze any poem. And this can definitely come in your exam also, where you can, where you are, you want to and you have to analyze the figurative language considering the impact on the reader. Of course, figurative language use ही इसलिए किया जाता है कि as a reader जब आप poem पढ़ें तो आपको इमोशनली और बहुत ज्यादा इफेक्ट करे। तो प्रोज से भी ज्यादा इफेक्टिव क्या है? पोएट्री। एंड फॉर पोएट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड figurative language. All right. So for lecture 7, again, we are having a oral communication. Engage effectively in a range of collaborative discussions. अब discussion क्यों करते हैं हम? To either give our information या information लेने के लिए हम discussion करते हैं, और वन ऑन वन डिस्कशन ग्रुप्स में भी होती है, ग्रुप डिस्कशंस जिसे जीडी कहते हैं, एंड टीचर लेड विद डाइवर्स पार्टनर्स. टीचर कैन मेक अ ग्रुप, make one person a leader and the other people to follow the leader, and then engage in a discussion about different topics, जैसे the disadvantages of social media, climate change, टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी डिस्कशन प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, और एजुकेशन इन पाकिस्तान, लर्निंग के हवाले से, कुछ लर्निंग टेक्निक्स के हवाले से. तो देयर आर सो मेनी प्रॉम्प्ट्स या क्वेश्चंस और टॉपिक्स which you can discuss. So for this purpose, students, I want you to record yourself when you get home. Record yourself speaking and then listen to it. This way you can be confident, और आपका जो वो नर्वसनेस और जो झिझक है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी. डिस्कशंस को सुने, यूट्यूब पे जाएं और डिफरेंट डिस्कशंस, डिबेट्स को सुने, देखें हाउ दे आर डिबेटिंग. आर दे डिबेटिंग, आर दे नॉट टेकिंग टर्न्स? यस दे डू टेक टर्न्स. वन ऑन वन डिस्कशंस, डिबेट्स इन ग्रुप्स, सो यू कैन वॉच दैट. नाउ इस लेक्चर से पहले आई वॉन्ट यू टू वॉच different discussions and debates, right? So then we will have a very good understanding of oral communication. Now, as always, in the writing competency, we have to write multiple paragraphs or essays or stories, multi-stanza poems. Yes, what are multi-stanza poems? Poems that are having more than one stanza. What's a stanza? Stanza is a group of different verses which makes a stanza. And when we have 3, 4, 5 stanzas, we call it a multi-stanza poem. You can read play script using mechanics of correct writing. Yes, what are play scripts? What is a play? Play is what we perform on the stage. And there's a play script जिसको पढ़ के you memorize your dialogues, the setting, whole situation, because it is a script. It is written on the paper and then you actually go for it. So इसमें क्या होगा? Multiple paragraphs. I will give you prompts to write paragraphs, and we will do it in live class as well. So you have to be ready with your notebooks and your stationery so that you can write the short paragraph or any kind of dialogue, right? All right. So these are all the 8 lectures we will be covering in Unit 4.
I hope that you're very well aware that how we are going to take these classes. The resources are given for you to solve them, and if you don't solve them then there is no point of doing this and learning this, because they are equally important. They are 50% of the job will be done when you are actually actively performing and actually solving the worksheets and the question banks or all those things like skill sheet, where your skill is made and then you are asked to write something on it, right? So do not worry about writing tasks. अगर आप गलत भी लिखते हैं, that's not a problem. You have to take the first steps. You have to take baby steps, and then you can be good writers. So we will be covering all these lectures starting from the very next lecture of today, of tomorrow actually. So इंट्रोडक्शन इसलिए आपको करवाया है सारे एसएलओस का कि आप जब लेक्चर को सुनेंगे उससे पहले थोड़ी सी प्रेपरेशन आपसे रिक्वायर्ड है, आपसे तकाजा है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा देखेंगे चीजों को और अपने क्वेश्चंस को पोज करेंगे इन द लाइव लेक्चर. Since this is a introductory lecture, so I know you have nothing to say, but even if you have any kind of question, you can straight away ask. कोई भी ऐसा एसएलओ जिसका मकसद आपको क्लियर नहीं है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और any competency, you can straight away ask. जी ओके, जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नैरेटिव राइटिंग. ऐसे ही है स्टूडेंट्स? तो नैरेटिव राइटिंग में आप मुझे बताएं. जी ओके, तो नैरेटिव राइटिंग में आपको प्रॉम्प्ट दिए थे दो, जिसमें आपने दोनों प्रॉम्प्ट्स पे एक नैरेटिव, एक स्टोरी लाइक पैसेज लिखना था, एंड दैट वाज योर होल वर्कशीट एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दैट लेक्चर. जी, so I hope that we will have a great time about unit 4, and we will learn so much more, and we will practice them also, and your assessment will also be done. जितने भी हमने SLOs पढ़े हैं, अब YouTube पे जाएं. This is how you prepare for the assessment. Go to YouTube, watch all the lessons, take notes कि इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि सर रीडिंग में क्या कर सकते हैं, पैसेज दे सकते हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको कह सकते हैं इसमें फैक्ट एंड ओपिनियन निकालें, राइट? आपको कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन निकालें, या राइटिंग में आपको कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें या ऐसे लिखें. तो आपको ये सारी चीजें वन बाय वन, टेक वन एसएलओ एट अ टाइम, पूरे तरीके से उसे पढ़ें, समझें और देखें कि इंटरनेट पे आपको फैसिलिटीज हैं, या उन्हीं वर्कशीट्स को, रिसोर्सेज को आप जब दोबारा देखेंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि असेसमेंट में क्या पूछा जा सकता है. नाउ let's wrap up the lecture. Before that, if we have any kind of question, they're very much welcome. जी, सादिया मोहम्मद बिन नदीम, students of by the name Asif Javed. Yes. जी, तो आई थिंक अभी तक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रहा है, दैट इज ऑन राइटिंग, बिकॉज दे आर वेरी हेजिडेंट कि हम कैसे लिखें, कहां से शुरू करें. तो उसके लिए क्या था? प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, जिसमें आप पहले प्लान करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर चेक करेंगे. इसी तरह आप अपने राइटिंग टास्क को परफॉर्म करेंगे. जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा लिख सकेंगे. अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी. वी वांट टू बी गुड राइटर्स with good grip on grammar, vocabulary and all these things. Transitional devices हैं या literary devices हैं, सारा you have to know, and even if you make mistakes, that is okay, that is totally fine by me. Thank you so much students. I'll see you in the next lecture of unit 4. We'll have lecture number 1 on tenses. तो आप सारे tenses को रिवाइज करें, पढ़कर आएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है then you will discuss with me, and then we will start the lecture. Thank you so much students. Take care of yourselves, and Allah Hafiz.